Yes. This is important from the context of international relations. It's very important. Okay. We have been trying to develop ourselves as a maritime based power for the last few years. We want to become something known as the net security provider of the Indian Ocean region. What? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. तो जिसको भी कोई भी तकलीफ है इस एरिया में, हम उसकी सारी मदद करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. Similarly, what China is trying to do, let's say, you see these islands. Okay, this is Philippines, this is China, this is the South China Sea. You have something known as the United Nations Convention on Law of Seas. What? United Nations Convention on Law of Seas. What it says is, let's say there is a country, कंट्री का 12 नॉटिकल माइल जो होता है उसके कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल. उसके बाद आप और 12 नॉटिकल माइल कर दीजिए. उसके बाद आप टोटली कीजिए 200 नॉटिकल माइल. You have full control over every economic, political activity in these 200 nautical mile. Beyond that is known as open ocean. What it is called? Open ocean में किसी का कोई हक नहीं है, ये सबका है. Because these are maritime routes. आप यहाँ पे किसी को रोक नहीं सकते. This is called global commons. What it is called? Global commons. Everybody has their rights. सबके हिसाब से चलता है यहाँ पे, कोई रोक नहीं सकता. चाइना ने क्या किया है? आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिया है यहाँ पे. तो आर्टिफिशियल आइलैंड बढ़ेले कौन हम? टेरिटोरियल वाटर बढ़ीगला, ओपन ओशन रही. You getting my point? They have created artificial islands. So when they have created artificial islands, their territorial water increases. Territorial water increase करने से क्या हो गया? Now they will start controlling the South China Sea. जो भी गया जो भी आया उनसे परमिशन लेके जाना पड़ेगा. जो भी आया जो भी गया उनको पैसा देना पड़ेगा. So is it not a threat to the rule based world order? It's a threat, right? It is a sheer threat कि एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, उसके हिसाब से हो रहा था. अभी चाइना ने क्या किया? अपना आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करके उसने अपना क्या किया? उसने अपना अपना टेरिटरी एक्सपैंड कर दिया. नाउ सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया इज दैट almost $3 trillion worth of trade passes through the South China Sea. 11 billion oil barrels वहीं पे हैं. 190 trillion cubic feet of natural gas वहीं पे है. 55% of India's trade goes through that. तो काली को सेमाने रखी देले, तुम्हारे तो लग गए. You getting my point? We get, if I show you the map, there is a place here called the Sakhalin Island in Russia. Sakhalin. वहां से हमारा ऑयल आता है. We get our crude oil from that. तो कल को अगर तुमको यहां पे रोक दिया तो भाई तुम्हारा तेल आएगा क्या? नहीं आएगा ना. So that is the problem I was talking about, that they want to choke every country through this. So they are basically violating the rules based world order, wherein they are creating artificial islands so as to increase their territorial waters. They want to convert open oceans into their exclusive economic zone and choke the world trading routes. This is what China. China is a rogue country. आपको लगेगा कि चाइना बहुत भद्र देश है, वैसा नहीं है, बहुत ही रोग है. It's very rogue. Okay, you got the significance of this. Next.
2013 में फिलीपाइंस चैलेंज किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यू आर बेसिकली वायलेटिंग द व्हाट UNCLOS इज आर दे नॉट वायलेटिंग? ये देखो, you are creating islands and you are violating, so this against international ये चाइना के अगेंस्ट आया था रूलिंग, चाइना के अगेंस्ट रूलिंग आया है। they also said artificial islands do not generate exclusive economic zones। आप आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करने से भी आपको वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के राइट्स नहीं मिलेंगे। हाउएवर चाइना बोलता है कि वी डोंट फॉलो दिस थिंग्स, हम ये रूलिंग को फॉलो ही नहीं करते। दे से वी डोंट फॉलो, yes they said it's not legally binding on us। however I'll tell you a story। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक वैसा ही डिस्प्यूट था। इंडिया gave the land as per the ruling। now Bangladesh is doing what do you call that exploration for oil and natural gas near West Bengal border। India gave the land as per the ruling। we are not a rogue nation, we are a democratic nation, we will work according to the rules based world order। we are not China। China accepts that now the world is unipolar, led by US। they are okay with a unipolar world and they also want a unipolar Asia, and that pole has to be China। you getting my point? so they are happy with unipolar world and unipolar Asia। they would never want the rise of another competitor like India। that is why for them the safest and the cheapest bet is a bigger country like Pakistan। पैसा दो, इंडिया में डिस्टेबलाइजेशन करो, सस्ते में हो जाता है ना, ये तो भिखारी लोग हैं, थोड़ा पैसा दो सब कर लेंगे। that is why the problem, they would never want you to grow। so China is not accepting the recent कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं 2026 में। यूरोपियन यूनियन और 14 कंट्री सब मिलके सपोर्ट किए हैं कि भाई इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री। चाइना कैनॉट हैव इट्स हेजेमनी ओवर इंडो पैसिफिक। यस, चाइना ने क्या किया है वहां पे? चाइना ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वहां पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करना चालू कर दिया। इट्स नॉट गुड। Why is China doing this? China is not only doing it for squeezing out trade but also to explore oil। वहां पे बहुत है। उसके साउथ में एक पर्टिकुलर शेल्फ है, you can read about that। मैं लिख देता हूं उसका नाम। इट इज कॉल्ड सुंडा शेल्फ। यहाँ पे बहुत तेल और नेचुरल गैस है, बहुत। So Australia, Japan, India, all of them are cooperating in a manner so that there is freeing up of the Indo-Pacific। ये नहीं हो सकता है, नहीं तो कल को कोई भी आके एक आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करके रोड ब्लॉक कर देगा। See, if we were to analyze this issue, China has created military bases। Yes, it is trying to project its power on other countries through Pacific Ocean। और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, तो लोगों को डर भी लगेगा ऐसा कहीं हमारे ऊपर उड़ा ना दे। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज अ मैकेनिज्म विच सेज दैट वी विल नॉट अटैक यू फर्स्ट। Our nuclear doctrine is known as no first use doctrine। We call it as no first use doctrine। It was initiated by your foreign minister's father, K. Subramaniam। Yes, initiated by these people, they start. Now
The no first use of India says that we will never attack anyone with a nuclear weapon first. Second, we will never attack any country which does not have nuclear weapon. So they want a level playing field in the war also. They want a level playing field in the war also. Getting my point? But यहाँ पे आप जो ये चीज किए हैं, इससे एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो जाता है. पाकिस्तान ऑलवेज नोज दैट यू विल नेवर अटैक न्यूक्लियर. सो इसीलिए वो आपके लिए छोटे 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 क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, क्योंकि उसको पता है कि आप कभी भी न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे. द डे यू चेंज योर स्टांस, नो फर्स्ट यूज से आप हट जाए कि नहीं, वी मे अटैक एनीवन एनी टाइम, आप देखिए उसके बाद आपका जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो आप बंद हो जाएगा. दे नो दैट यू विल नॉट डू इट and they always bluff that we have nuclear weapons, and we will use it, but they never use. In the Operation Sindoor, for the first time, we caught their bluff. तुम्हारे पास है, हम बिना न्यूक्लियर के ही तुम्हारा उड़ा देंगे पूरा. You getting my point? That is the thing. So China is doing the same. It is trying to deter other powers कि भाई मेरे साथ मस्ती मत करो. Yes, देखो सबुठु मेजर जिनस, these are all coral reef. So they have destroyed the entire marine biodiversity, the coral reefs पूरी बर्बाद कर दिया है. इसका तो कोई compensation है क्या? नहीं है ना. Every country in the world has certain duties with regards to environment. We call it as CBDR. What we call it? CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी. तू 20 साल 50 साल से कर रहे हो क्या पॉल्यूट, तुम ज्यादा पैसा दोगे. ये 10 साल से कर रही है, वो कम पैसा देगी. वो करने वाली है तो कर, अदरवाइज हाउ विल शी ग्रो. I told you, no, we have an environment cost to pay, but her payment will be done by you because you've been polluting this for last 200 years. America, from 1780s they've been polluting. Industrial revolution. UK, we never had those industries, right? So it's just common but differentiated responsibility. ये तो responsibility ही नहीं है. Don't you see that China is behaving like a rogue from all the angles? It is not following legal precedences. It is destroying environment, economic choke point, as well as nuclear projection. From all angles, it is a rogue. India के लिए problem ये है, but we have started doing something else. When we are saying that 55% of our trade goes through that, now we have started negotiating with Indonesia that we can also choke the Strait of Malacca. तुम हमारे साथ वहां करो, यहां से बाहर निकल नहीं पाओगे. We are making the Great Nicobar project, which is essential for India's security. Right. It is essential for India's security. We went to Indonesia now. We are also making another port in Indonesia so that we can have a global control over maritime routes. We don't want to choke, but if somebody chokes, we can retaliate. From Bab al Mandeb till Malacca, China ro doro seita achi, India can choke anytime. That is why it is doing all this. उनको डर है हमसे. Okay, so India is doing all these things. India stand. India is always against coercion. India is always against expansion. हमने कभी कहीं expansionist activities नहीं किया है. हमने आज तक अपना POK ही नहीं लिया है, बाकी तो दूर की बात है. तो हम कहीं expansionism में follow नहीं करते, हम militarization में follow नहीं करते. We always believe in the law of global
commons. Space should be utilized as per global commons. Arctic Ocean, Antarctic Ocean should be used as per global commons. Open oceans should be used as per the rules of global commons. So we believe in the rules-based world order. That is the terminology, rules-based world order. India is a strict follower of that. That is why I told you we gave land to Bangladesh. ले जाओ, देखो मैंने आपको बोला कि इंडिया क्या कर रहा है. India is doing this, strengthening the Indian Navy. We have created a lot of new things in the last 10 years. Indian Navy has become very strengthened because now the warfare has come to the seas. Because trade and commerce, आपको और डायरेक्ट मारने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिकली चोक कर दो. So we have to be strong enough, and we have become strong from the naval point of view. We have become a net security provider in the entire Indian Ocean region. Second, हमने आसियान कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन किया है. क्वाड, यू नो क्वाड, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया. हमारा खुद का एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है. हमने बहुत सारे डिफेंस डील्स भी किए हैं. वी आर गिविंग ब्रह्मोस टू मल्टीपल कंट्रीज. वी आर गिविंग पिनाका टू मल्टीपल कंट्रीज. यस, तो यूएई के साथ अभी हमने बहुत अच्छा डील साइन किया है, हम उनको दे भी रहे हैं. सो वी हैव एक्चुअली डाइवर्सिफाइड आवर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. डिफेंस पहले हमारा नहीं था. दिस इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इन द नेक्स्ट लास्ट 10 years. डिफेंस फील्ड में हमारे एक्सपोर्ट्स, it is 34,000 crores now. It was 8,000 crores some 10 years back. And for all this, there is only one man who has done all of it. His name is Manohar Parrikar. He was India's defense minister, and it is because of his policies that what you are seeing is happening on ground. Manohar Parrikar, नाम याद रख लेना. ये है लास्ट. तो मेरे हिसाब से चाइना तो कभी मानेगा नहीं. चाइना तो कभी मानेगा नहीं. What we need to do is we need to have a counteract to all these things so that our economic interests are never hampered. But India is not a country which produces oil. बाहर से आता है तभी हम उसको यूटिलाइज कर. और हमारा अगर 55% का 55% का हमारा अगर ट्रेड यहीं पे चोक हो जाए तो इमेजिन कितने हमारा ये तेलोरा प्रॉब्लम रहिबो, होना नहीं. दैट इज द थिंग. दैट इज हाउ वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर थिंग्स. ठीक है, चलो, थैंक यू. We will meet again when? We will meet next.